So today, after we have studied the coronary circulation, we are going to start with the ischemic heart disease, and that is actually the coronary artery disease. Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with angina pectoris, and the meaning of this word is pain of the chest. It is felt beneath the sternum and it is referred to the left shoulder and down the left arm. अब आपने मुझे ये बताना है कि ये रेफर्ड पेन क्यों यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जा रहा है और लेफ्ट आर्म पर जा रहा है, और इसकी एम्ब्रियोलॉजी में आपने वजह तलाश करनी है. The symptoms appear whenever there is transient ischemia. If there is permanent ischemia, there is myocardial infarction. The symptoms of angina pectoris appear whenever there is transient ischemia as the cardiac oxygen demands become too great in relation to the coronary blood flow during exertion or in the emotional stress. ये तो आपको लग रहा है कि ये शायद काफ़ी एक्सर्शन करने पर होता होगा, लेकिन जैसे जैसे थ्रोम्बोसिस एक्सटेंड करती है, the patients first of all starts feeling uncomfortable when the patient is walking down the street. Then he becomes uncomfortable in walking in the house. So that is actually angina pectoris, that whenever you try to do a little exertion, if the blood vessels are constricted, the oxygen demands will not be met, and that will give rise to pain in the chest, and the person will sit down and take rest so that the pain is relieved. So the next point is pain is relieved by rest and nitroglycerin. Nitroglycerin is a substance which when taken is converted to nitric oxide. And what is nitric oxide? It is a vasodilator of all the blood vessels in the body, including the coronary vessels. So nitric oxide is a vasodilator, and this will increase the coronary blood flow so that the oxygen demands are met with and the pain is released. Prince metal angina. ये नाम आपको याद रखना है, इतना परेशान नहीं होना जब भी कोई पूछे. इसमें एक्चुअली रेस्ट पर पेन होती है. द पर्सन इज रेस्टिंग, देयर इज नो एक्सर्शन एंड सडनली देयर इज वाजोस्पैज्म. ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाए एकदम या कोई और वजह हो जाए, सडनली देयर इज वाजोस्पैज्म that decreases the blood supply to an extent that the person gets decreased coronary blood flow as compared to the normal cardiac oxygen demands, and angina starts. The ECG changes of angina pectoris are a little T-wave inversion most of the time, which is reversible, or there could be a little sagging of the ST segment. Now you are going to study the myocardial infarction, and you will, in this lecture, you will try to understand the role of atherosclerosis in the myocardial infarction, the triggering event that causes blockage or vasospasm leading to myocardial infarction, the pathophysiology of this disease, the role of collateral circulation in disease, the common causes which are responsible for death after infarction has occurred, the stages of recovery from infarction, the diagnosis and therapeutics of the myocardial infarction. So we go on to the myocardial infarction. It is a very common cause of death, and it occurs due to widespread occurrence of atherosclerosis. जहाँ पर atherosclerosis नहीं है तो myocardial infarction नहीं होती.
जिस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस है उसी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। देन rupture of an atherosclerotic plaque or hemorrhage into it triggers the formation of a coronary occluding clot at the site of plaque. आपके पास पेशेंट है, उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना हुआ है, वो एक तरफ को फाइब्रोस्ट पड़ा है, तो कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी वेसल ब्लॉक नहीं होती। लेकिन अगर उसमें हेमरेज हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो, तो एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होती है और हेमरेज हो सकता है इनटू द प्लाक। तो फिर वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जैसा कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन के बाद थ्रोम्बोसिस होती है। So rupture of an atherosclerotic plaque or hemorrhage into it triggers the formation of a clot that can occlude the coronary vessel. Even a partially occluded coronary artery can be further constricted by vasospasm. ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में अगर हो भी गई है क्लॉट फॉर्मेशन, तो उसके साथ साथ जो इरिटेशन है वहां पर, जो इंजरी से प्रोड्यूस हुई है, वो अभी आपका वेसल ऑक्लूड नहीं हुई, ब्लड फ्लो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अगर वहां पर इरिटेशन हुई है और उससे देयर इज वाजोस्पेजम, देन इट कैन कॉज severe and prolonged myocardial ischemia, वो रेस्ट करने पर भी ठीक नहीं होगा, and irreversible changes occur in the cardiac muscle. Now coming to the pathophysiology of myocardial infarction, what happens is that when the blood flow stops beyond this occlusion in the coronary artery, the muscle which is supplied by this vessel is injured. Now, if there is collateral circulation present, the blood in this circulation begins to come to this infarcted area due to local vasodilation. वहाँ हाइपोक्सिया हो गया था, उससे local vasodilation हुई और blood जो है वो वहाँ पहुँचा. Now this area is overfilled with stagnant blood. At the same time, the muscle fibers extract all oxygen from the hemoglobin in the dilated blood vessels. The deoxygenated hemoglobin has a bluish brown color, so the area of infarct is a little bluish brown in color. Number 4, the vessel wall becomes permeable due to damage and fluid leaks out into the extracellular space. Number 5, the cardiac muscle cells have less cellular metabolism and lack of oxygen and sodium potassium ATPase leads to the lack of activity in the sodium potassium ATPase leads to edema and swelling of the cardiac muscle cells. Now, when the cardiac muscle cells are edematous, within a few hours of the blockage, the cardiac muscle cells die in the central portion of a large infarct. और ये याद रखें कि इससे लाइसोसोम्स जो है ना वो रिलीज होते हैं, और लाइसोसोम्स जो हैं वो अपने इमीडिएटली जो एडजेसेंट एरिया है उसमें भी जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं. जब एक सेल डाई आउट करता है, उसमें से लाइसोसोम्स जो हैं वो उस सेल को ईट अप करते हैं, तो साथ वाला जो पोर्शन है उसमें भी जरूर लीकेज की वजह से सेल्स डैमेज होते हैं. The cardiac muscle cells will not die if it gets 15 to 30% of the resting oxygen supply. तो जो बाहर का एरिया है बिल्कुल adjacent to the collateral circulation, the outermost area of the infarct does get some blood supply from adjacent blood vessels, and if it is sufficient enough, that is 15 to 30% of the resting oxygen level, then it will not die. So the area, the outermost portion of the infarct is improved, and the area just adjacent to the infarct, just adjacent to the central portion dies out. इस तरीके से आपका जो we have been talking about collateral circulation in the previous slides, and we have talked about collateral circulation in long-term control of local flow, and collateral circulation developed wherever there was hypoxia due to occlusion of some vessel.
ज़रूरी नहीं है कि पूरी वेसल ओक्लूड हुई हो, थोड़ी सी भी जहाँ पर इस्कीमिया, प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया शुरू हो जाता है, थोड़ा सा भी जहाँ पर वॉल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है, तो वहाँ पर कोलेट्रल सर्कुलेशन के लिए फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग कोलेट्रल सर्कुलेशन वो अपीयर हो जाते हैं. Even the heart, if it has got sustained demands with regular aerobic exercise, factors that promote collateral circulation will come along and will start it. The small terminal branches from the adjacent blood vessels are nourishing the same area, and these accessory vessels, if they have developed, they are life saving for a person. आप पीछे slides में check कर चुके हैं. In the absence of collateral circulation, the extent of the damaged area during a heart attack depends on the size of the blood vessel that is damaged. ये बात बहुत वाज़ेह है. Let's see now this diagram. This is your aorta, and from here the right coronary artery is arising and it is supplying the right ventricle. This is the left coronary artery which is supplying the left ventricle, and you see if there is a blockage here at point A, the area that is injured is this one, whole of it, and if the blockage is in this small branch, small artery at point B, the area of injury is this one, small. So the area damaged, extent of the area damaged depends upon the area of the site where the coronary vessels are blocked. Now let us have a look on a small infarct. If the area of ischemia is small, little or no death of the muscle may occur because part of the muscle is becoming non-functional and the area which is having mild ischemia is getting collateral circulation, which may reach this non-functional area after vasodilation, and when nutrition and support to the muscle comes, it will start contracting. But if the adequate nutrition does not reach the central portion, it may die out. Now you see, if the area of ischemia is large, some of the muscle fibers in the center of the area die rapidly within 1 to 3 hours due to complete blockage. ये लाल रंग के ना, due to complete blockage of the blood supply. Immediately around this dead area is the non-functional area where impulse conduction is not occurring and the contraction is not occurring. Because impulse conduction नहीं होगी तो contraction नहीं होगी. Then extending around this area in the circumference is a non-functional area. Of this non-functional area is an area that is contracting but weakly because of mild ischemia. तो जो blood vessel है उससे इर्द गिर्द से जो blood vessels आ रही हैं थोड़ी सी blood supply तो दे रही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस्कीमिया, माइल्ड इस्कीमिया है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन चल रही है. अब जो चीज आपके समझने की है वो ये है कि जो डेड मसल है वो बाद में स्कार टिश्यू में कैसे चेंज होगा और डेड मसल जो है उसका अपना फेट किस हिस्से का क्या होगा. तो सबसे पहले वी डिवाइड दिस इंफार्क्टेड एरिया इनटू टू जोन्स. One is the central area where death of the muscle fibers has occurred, and then there is an area surrounding that has got non-functional cells which are not contracting at this time, but they have got a different fate. Now this dead tissue, which was smaller initially, is going to enlarge because the dead tissue is going to release lysosomes, and these lysosomes are going to cause further death of certain cells in the margin of this smaller dead area, so that the dead tissue area becomes larger. Now, initially आप देख रहे हैं कि the non-functional tissue was this, and now the non-functional tissue has decreased in size because some of it has been converted to the dead tissue.
अब जो ये फाइनली जो मार्जिनल एरिया है, देयर इज गोइंग टू बी सम कोलेटरल सर्कुलेशन एंड सम vasodilation which lets it receive some nutrition and it will be improving in its activity. And now these two we have seen, and now we see three areas here. Number one is इनिशियल पोर्शन जो सबसे पहले डेड हुआ था, वहां पर सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट विल एलिमिनेट एंड दे विल फॉर्म अ स्कार टिश्यू. उसके बाद जो एरिया बाद में डेड हुआ था, नाउ द फाइब्रोब्लास्ट विल आल्सो कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ स्कार. सो जितना रेड एरिया यहाँ बना है ना, इस सारे को स्कार टिश्यू में कन्वर्ट होना है. So this is the area that is being converted to the scar tissue. और फिर उसके बाद जो नॉन फंक्शनल एरिया बिल्कुल पेरिफेरी में था, बिल्कुल मार्जिन पे था, वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो कोलेटरल सर्कुलेशन से इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि वो एरिया रिकवर कर जाए. उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? गिव रेस्ट टू द पेशेंट. उसकी ऑक्सीजन डिमांड ना बढ़ाएं, उसको रेस्ट दें, ताकि उसके लिए जितनी भी ब्लड सप्लाई आप नाइट्रोग्लिसरीन के साथ दे रहे हैं वो काफी हो जाए डायलेटेड ब्लड वेसल्स में से. रेस्ट टू द पेशेंट इज वेरी एसेंशियल. इसके बाद ये है कि फाइनली दिस area, the white one and the red around it, will be converted into the fibrous tissue, and this purple area around the margin of this white tissue will heal. नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल मायोकार्डियल एक्टिविटी देंगे, एंड व्हेन दिस मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट देयर विल बी अ स्मॉलर स्कार एज कंपेयर टू द इनिशियली फॉर्म्ड स्कार. और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि द सेल्स इन द मार्जिन्स ऑफ द स्कार वो तो हेल्दी हो गए थे ना. अब दे विल हाइपरट्रफी अ लिटिल टू कंपेंसेट फॉर द लॉस्ट डेड cardiac musculature, and the activity of the heart, if given proper rest and proper treatment, will start about a little less than normal. Now we are going to talk about subendocardial infarction, and for that what we need to know is that the subendocardial muscle has the higher oxygen consumption, and it is also having least blood flow because the blood vessels in this area are intensely compressed by systolic कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. इसके लिए अब आपको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि सब एंडोकार्डियल मसल की लेयर जो है वो आप सोचें कि ये सबसे पहले आपके पास बाहर की तरफ जो है दैट इज सब एपिकार्डियल लेयर ऑफ मायोकार्डियम. And then underneath is the middle layer of the myocardium. ये आपस में perpendicularly placed होते हैं. ये रैप कर रहे हैं ventricular cavity को in 3 layers. क्योंकि ये इसके नीचे से गुजर रहा है इसलिए इसको आपको वो नहीं नजर आ रहा है, इसमें से बीच वाले हिस्से में मिडल लेयर नजर नहीं आ रही. और अब हम जाते हैं थर्ड लेयर पर जो कि सबसे नीचे है. सो इट इज गोइंग लाइक दिस. underneath the 2 layers. अब जब आपके पास ब्लड सप्लाई आती है टू, सो यू हैव टू रिमेंबर ब्लड सप्लाई हम डार्क पर्पल में बना लेते हैं. उससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ब्लड वेसल है. द ब्लड वेसल इज कमिंग एंड इट इज गोइंग टू द outer layer at first, then it penetrates the middle layer, and then it goes to the subendocardial layer of the muscle. ठीक हो गया. Now we shall see that if the blood but now we are going to talk about the nerve supply. Nerve supply के लिए मैं अगली डायग्राम बनाती हूँ. This is the subendocardial layer. Here is the nerve fiber, that is the bundle branch or Purkinje fiber lying on the endocardial surface of the endocardial of the muscle, and then we are going to draw the muscle, and here is the subendocardial muscle. Overlying it is the transmural
central portion of the muscle layer. मैं थोड़ा ही बनाऊंगी ताकि आपको चीज वाजे नजर आती रहे. And the outermost layer is subepicardial muscle. So you see that the blood vessel is going to supply the outer portion at first, and the nerve fiber is going to supply the inner portion at first. And with this, we go on to the fact that this subendocardial nerve is going to depolarize the subendocardial muscle first of all, and it is going to contract at first. It will keep on contracting, and the muscle to muscle transmission of impulse will go from subendocardium to middle of the myocardium and then to the outer side of the myocardium. This is the sequence that subendocardial muscle starts contracting first, and then the middle layer and then the outer layer. This will cause larger, then there is repolarization, and the repolarization will be occurring in the outer layer first, and then in the middle layer, and then in the subendocardial layer. So the longest duration of contraction is in the subendocardial muscle, whereas the highest blood supply is going to the outer area, which is contracted for a lesser time. Then middle area and then the subendocardial area will be having the last terminal branches, and they are being contracted for a longer time because the subendocardial muscle stays contracted for a longer time. In this way, it is going to consume more oxygen, and its blood supply is compressed by systolic contraction for a longer time. That is why it is more prone to deficiency of oxygen if an extra load is put on the heart. Now, this compromised blood flow to any area of the heart, बाहर से आपने देखा अब एक जगह पर क्लॉट आ गया आर्टरी में, अब उसके इर्द गिर्द जो है बाकी ब्लड वेसल्स बाहर वाले एरिया को तो सप्लाई कर देंगी कोई ना कोई ब्रांच देकर, but the compromised blood flow is usually causing damage at first in the subendocardium, and then if the compromised blood flow continues for some other time, the damage then spreads outward towards the epicardium. ये बात अब समझ में आ गई है कि सबसे पहले सब एंडोकार्डियम में इन्फैक्ट होगा और फिर उसके बाद वो स्प्रेड करके बाहर वाली लेयर्स में आएगा. Now, once the infarction has occurred, the acute myocardial infarction is the cause of death mostly. जो ही myocardial infarction होती है, जो पेशेंट होता है वो 70% 40% लोग जो हैं वो तो उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है, और बाकी जो है वो बाज़-औक़ात हॉस्पिटल जाते तक उनकी डेथ हो जाती है. जो कुछ भी है हम वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ after the acute myocardial infarction have occurred. You have studied that some portion of the muscle has become non-functional. So suppose this is the area where myocardial infarction has occurred, and now it has become non-functional. What will happen? This is the normal contour of the heart during the diastolic phase, and this is the contour of the heart, the ventricles, during the contracted phase. When the heart muscle will contract, the blood, instead of going into the aorta, will be pushed into this non-functional area because it is not contracting and it is a weak area. This will bulge outwards due to systole, and it will stretch this area. बेचारा weakened भी है और systole का जो compression है वो इसके ऊपर मज़ीद stretch डाल रहा है. एक तो ये हो गया, दूसरे जो pumping force of the heart that was pushing the blood into the aorta is lost to a great degree, and this can cause decreased cardiac output and death in case of decreased blood supply to the body. We are still continuing with the previous point where systolic stretch was occurring in the myocardial infarction, and when more than 40% of the left ventricle wall is infarcted, this is going to decrease the cardiac output to an extent that blood will not be going to the aorta, rather it will be stretching in the systolic stretch area, and because of that
Decrease in the blood flow to the body, systemic circulation, will cause cardiogenic shock. And in these cases 70% people will die due to cardiogenic shock. अब ये आपका complete हो गया पिछली slide पर जो चल रहा था point. And now we go on to the second common reason of death after myocardial infarction, and that is damming of blood in the body's venous system. जब blood आगे नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा? जब ब्लड आगे नहीं जा रहा, सिस्टली की कॉन्ट्रैक्शन में वो फोर्स नहीं है कि ब्लड एओर्टा में पंप हो सके, तो फिर वो ब्लड जो है वो वीनस सिस्टम में जमा होता जाएगा, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में, राइट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम में, और फिर उसके बाद इंफीरियर सुपीरियर वीना केवा में. ये एकदम नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है, लेकिन स्टिल ये 2-3 घंटे भी लग सकते हैं इसको. अगर बहुत बड़ा इन्फार्क्ट है तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर छोटा इन्फार्क्ट है तो ये chronic cardiac failure की वजह बन सकता है. So we read it out. Damming of blood in the body's venous system, and the reason is when the heart is not pumping blood forward, it dams in the atria and lungs or in the systemic venous system. The symptoms develop a few days later. ठीक है, अगर तो बहुत एक्सटेंसिव है फिर तो उसी वक्त सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, अगर बहुत बड़ा एरिया मायोकार्डियम का इन्फेक्टेड हो गया. वरना द सिम्टम्स डेवलप अ फ्यू डेज लेटर when the decreased renal blood flow, when the blood is not going to the aorta, it is not going to the renal artery, and it is not going to the kidney, and the GFR is decreased, producing decreased urine, and the kidney senses that the volume of blood is low because it is not coming to me, and it retains extra fluid. This extra fluid, this is not the fluid that will be coped by the heart. उसके पास तो जितना आ रहा था पहले वो उसी को पंप नहीं कर पा रहा, तो जब और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो जमा हो जाएगा, this will cause pulmonary edema, and pulmonary edema because of respiratory failure can cause death of the person. Now coming to the third reason of the common causes of death after myocardial infarction, ventricular fibrillation, which leads to no cardiac output. जब वेंट्रिकल पूरी तरह एक दफा सिंसिटियम में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाएगा. Death can occur because of sudden ventricular fibrillation in case of a large infarction, or even after small occlusions, or even if there is no acute infarction. समझ आई? इसका मतलब ये है कि अगर अचानक लार्ज इन्फार्क्ट हो गया है और कार्डियक आउटपुट खत्म हो गया है तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स में भी ब्लड नहीं जाएगा, और उसकी वजह से हार्ट में एक्साइटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, एंड दैट कैन कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. दूसरा है आफ्टर स्मॉल ओक्लूजन्स. अगर किसी नर्वस टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू का एरिया जैसे कि बंडल ब्रांचेस हैं या परकिंजी फाइबर्स हैं, इफ देयर इज ischemia of that area by a small blood vessel occlusion, this can cause ventricular fibrillation. या अगर acute infection हुआ भी नहीं है, old cardiac ischemia है, तो उस वक्त भी sometimes any electrolyte imbalance or increased potassium level in the ECF can cause ventricular fibrillation, and that will be the cause of death in this person. The ventricular fibrillation can occur 10 minutes after the infarction if it is a large infarct, 1 hour later if it is a lesser infarct, and that will continue for another few hours, and even many days after the infarct. तो आपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवाई आफ्टर द इन्फार्क्ट और वहाँ उसके ऊपर लोड पड़ा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, और इन्फेक्टेड एरिया जो कि इंजर्ड एरिया है उसमें फिब्रिलेशन स्टार्ट हो सकती है और फिर सारे वेंट्रिकल में फैलती हैं. चेन रिएक्शन को आप जानते हैं बाय योर प्रीवियस नॉलेज. The tendency for fibrillation increases by leakage of potassium into the ECF. Potassium leaks into the ECF. When does it leak?
When the sodium potassium ATPase is not working, when will it not work? When oxygen is deficient. When will be oxygen deficient? When there is occlusion of a coronary vessel. यहाँ तक हो गया. So the potassium which is coming out is not being thrown back into the cell by the activity of sodium potassium ATPase, and because of that its amount increases in the ECF, and the current of injury is there. That means this area, infarcted area, is all the time depolarized, and there is sympathetic overstimulation of the heart. हार्ट में जब दर्द होगा तो सिंपैथेटिक नर्व्स तो आएंगी ना उसको हेल्प करने. Sympathetic overstimulation of the heart increases the excitability of the heart. This can cause fibrillation and dilation of the heart, promoting circus movement. Heart जो है वो कमज़ोर हो गया है और उसमें systolic stretch वाले events अगर आ रहे हैं तो वो अब dilate हो गया. Flaccid and dilated heart elongates the pathway through which the depolarization has to go on, and this promotes circus movement. ये सारी चीजें आप fibrillation, ventricular fibrillation in ECG में उसकी physiology में पढ़ चुके हैं. This is the same thing. और बस अब आप इसको याद रखें कि ये आपने यहाँ पर fibrillation के causes में बताना है. Another cause of death is rupture of the infarcted area. अगर बहुत बड़ा infarct है और बहुत कमज़ोर हो गया है, after a few days the dead muscle fibers begin to degenerate and the heart wall becomes very thin and fibrous. Now the dead muscle bulges outward to a severe degree with each heart contraction. This is systolic stretch, and this finally ruptures the heart. The loss of blood into the pericardial space causes compression of the heart from outside. इसको कहते हैं cardiac tamponade. The venous return that had to come to the right atrium is now decreased because of outside compression, and the patient dies due to decreased cardiac output. This is simple, you just have to remember the facts. Coming to the diagnosis of myocardial infarction, अब बात यह है कि आपके सारे मरीज जो चेस्ट पेन के साथ आते हैं वो सारे के सारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं होते. तो पहले तो आपके क्लिनिकल साइंस जिसमें लो ब्लड प्रेशर और इरेगुलर पल्स और रैपिड एंड थ्रेडी पल्स, ये तमाम चीज़ें, देयर इज स्वेटिंग ऑन द फोरहेड, ये सब चीज़ें जो हैं ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन की निशानी है. कंप्लेंट ऑफ इनडाइजेशन एंड severe weakness, जिसका मतलब है कि ब्लड नहीं मिल रहा, सर्कुलेशन में नहीं आ रहा, ये तमाम चीज़ें मायोकार्डियल की निशानी है. सो अ पर्सन हु कम्स विद द चेस्ट पेन हैज़ टू बी डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उसके लिए सबसे पहले यू सी द ECG ऑफ द पेशेंट. आप उसको लिटाते हैं बिस्तर पे, साथ ही उसकी ECG करते हैं, एंड इफ there may be positive changes in the ECG, there may be mild changes in the ECG, there may be no changes in the ECG, but you are not going to discard the patient as not having myocardial infarction when the clinical signs and symptoms are indicative of cardiogenic deficiency of blood supply to the body. After doing the ECG, you send the cardiac enzymes. When the myocardial cells die, they leak enzymes into the circulation. The measurement of these enzymes, that are serum enzymes and isoenzymes, like the MB isomer of the creatine kinase, the troponin T and troponin I levels in the blood, if they are raised, this is indicative of myocardial infarction. Thallium scan is another feature. If you do thallium scan of a patient who has had myocardial infarction a few weeks back, you can see the infarcted area, and because thallium collects in this dead tissue easily, and you can demarcate this infarcted area and the extent of damage to the body, to the heart. The objectives of treatment of a patient of myocardial infarction are to restore the blood flow to the affected area rapidly,
to minimize the reperfusion injury, and number 3, to avoid irreversible changes in the heart function. When there is an acute case, you give antithrombotic agents, but they can increase mortality by excessive bleeding during cardiac surgery. कौन से हैं? ये होती है हेपरिन। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप जो हैं वो भी देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि वहां से क्लॉट को रिमूव करता है। तो ये क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो क्लॉट को रिमूव करता है। तो जो हेपरिन है, अगर आपने वो दिया हुआ है और आपको इमीडिएटली कार्डियक सर्जरी करनी पड़ गई है, तो उसमें फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग का खतरा होता है। Mechanical surgical approaches include balloon angioplasty, implantation of stents और coronary artery bypass grafting। ये आप gradually सीख लेंगे with time when you go to the higher classes.